आज का हमारा जो क्लास है 12th क्लास के लिए और सब्जेक्ट जो हमारा है जियोलॉजी है. We have already discussed in the previous class what are earthquakes. As you know, earthquake is shaking or vibration of earth due to the rapid release of energy deep inside the earth, with the result of releasing energy, waves are created. Those waves are known as seismic waves, and those waves move in all the directions. With the result, they reach on the surface and shaking of earth takes place. So that is known as earthquake. These are the 2 points, spokes and epicenter, which are related to the earthquakes. Our today's class is regarding focus and epicenter of an earthquake. Focus, which is also known as hypocenter of an earthquake, is a point where from the rocks start to fracture and earthquakes are generated. Actually, this focus, which is deep inside the earth, if we take this the surface, ground surface, and we are standing on this ground surface. When we dug the earth, or when we go from the surface to deep inside the earth, there is a point which is known as focus, where from the rocks start to fracture, and with the result earthquake is generated. Either the fracture of rocks takes place due to heat and pressure or movement of tectonic plates inside the earth. Conversion of plates or diversion of plates takes place, with the result earthquakes are generated. Actually, this focus signifies zone rather than point of origin. This is a big zone. This focus signifies a zone rather than point. So in this zone, which is we treat as focus, this is the origin where from the earthquake is generated, where the rapid release of energy happen or take place. It may lie from a few hundred meters from the earth or hundreds of kilometers from the surface of earth. So this focus lies up to hundreds of meters or kilometers below the surface of the earth. So now what is epicenter? The point on the surface directly above the focus. So from the focus, which is deep inside the earth, we take a point which is straight from the focus straight to the ground or in a vertical direction to the ground surface, is known as directly above, vertically direct above the focus, is known as the epicenter. So this is simple. Epicenter is directly in a straight way or in a perpendicular direction on the surface, that is known as epicenter. So focus is deep inside the earth and epicenter is directly above it on the surface. Simple. So these forces of natural earthquakes are found at different depths from the ground. So there are 3 levels of forks. Number 1, shallow forks. Number 2, intermediate, and number 3, deep. On the basis of depth of these forces, we consider the magnitude on the Richter scale. So if the magnitude on the Richter scale is 5 to 5.9, if the magnitude of an earthquake on Richter scale is 5 to 5.9, it means the depth, the focus is below the surface from the epicenter, from the surface
deep inside the earth below is up to 70 kilometers. So we can say that the depth of an earthquake or the force of an earthquake lies up to 70 kilometers when there is magnitude of earthquake 5 to 5.9. Similarly, if the magnitude of an earthquake is 6 to 6.9, then we can say the depth is at intermediate force. We treat it as we know it as intermediate force, and the depth of the earthquake where the release of energy have been taken place is 70 kilometer to 300 kilometer. So when the magnitude of an earthquake is above 7, then we say that the depth of an earthquake is 300 kilometers to 700 kilometers below the surface of the earth. So this was regarding the force and epicenter. Force is also known as hypocenter, and epicenter is the next term which is on the surface, whereas force is deep inside the earth. बेसिकली ये जो फोकस अर्थक्वेक का होता है ये एक ऐसा पॉइंट है जो जहां से शुरू हो जाता है रॉक्स का ब्रेक डाउन, जहां रॉक्स फ्रैक्चर हो जाते हैं जमीन के अंदर, जहां पे ये रॉक्स फ्रैक्चर हो जाता है या रिलीज ऑफ एनर्जी या टेक्टोनिक प्लेट्स मूव एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जहां से ये स्टार्ट, जिस मकसद ये है कि जिस वजह से अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, वजह क्या होती है, जमीन के अंदर किसी भी गहराई तक जब कहीं पे भी एक जोन होता है, जिस जोन में या वो जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, जहां से शुरू हो जाता है वजह अर्थक्वेक्स का, उसको हम रैपिड ऑफ रिलीज, उसका वजह रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी का हो सकता है, या फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स इन डीप इनसाइड द अर्थ, जिनकी वजह से जमीन हिल जाती है, जलजला आ जाता है। सो उस जोन को या उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं जमीन के अंदर। मैंने आपको बताया ये तीन तरह का जो फोर्सेस होते हैं, तीन तरह के होते हैं। शैलो फोकस हम तब कंसीडर करेंगे जब सिर्फ 70 किलोमीटर की गहराई तक जलजले का ये जो फोकस होगा। वो कैसे हमें पता चलेगा, जब जलजला हम रिकॉर्ड करेंगे सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से सिर्फ 5 से लेके 5.9 तक, तब हम जाके बताएंगे कि हमारा जो जमीन के अंदर गहराई, जिसको हम डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक कहते हैं, फोकस कहते हैं, वो फोकस 70 किलोमीटर की दूरी पर जमीन से होगा जब मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे 5 से लेके 5.9 तक रिकॉर्ड किया जाएगा सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से। इसी तरह से हम बताएंगे जमीन से इंटरमीडिएट फोकस तब हम कहलाएंगे जब 70 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की दूरी पर हम बताएंगे, तब है हमारा इंटरमीडिएट फोकस जब रेक्टर स्केल पे, जमीन पर रेक्टर स्केल पे सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर की वजह से रिकॉर्डिंग 6 से लेके 6.9 मैग्नीट्यूड का जलजला रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह से जब जमीन पर 7 से ज्यादा रेक्टर स्केल की से रीड करेंगे हम, 7 से ज्यादा जलजला आ चुका है, सिस्मोमीटर से इसको रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके बताएंगे हम कि ये जो जलजला है ये डीप फोकस का होगा और इसकी जो डेप्थ होगी 300 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक। हो गया ये फोकस का, सिंपल सा है। एपिसेंटर दूसरा पॉइंट क्या होता है, फोकस के डायरेक्ट वर्टिकली अबव ऑन द ग्राउंड, डायरेक्टली वर्टिकल और डायरेक्टली और वर्टिकली जस्ट ऑन द सरफेस, द पॉइंट which is vertically or directly above the focus. When we take this line from the focus which is deep inside the ground on the surface, when we connect this line on the surface, the point where it connects is known as the epicenter of the earthquake. So this was regarding focus or hypocenter and epicenter of an earthquake. So this was today's class.